2 likes are there on our live session. Fantastic. So people are actually waiting for this live session because I have seen whenever we post, no, there are so many people who will comment that yes, thanks for going live and all. Yes. So Viva, today's topic, if you could tell us. Yes, you're audible. In between, little bit of I would say network error is coming. Yeah. हम्म, Yeah. हाँ अभी आया वापस आया ठीक है Yes, sir. Okay. okay so today's topic and everything can we just start discussing about it so I want you to start with it like why we have chosen this topic and why it is so much important. Okay. So first of all, we are going to discuss on assessment. Now there are few various types of assessment. So in this session, we are going to discuss about orthopedics, especially. So why is it necessary to assess? Because from that will come to a diagnosis, and on the basis of a diagnosis, we can plan our treatment protocol, which we learn in final year. Yes, perfect. So assessment is kind of tool for us which helps us for understanding our patient's complaint and that is why we are taking it and for that we have a specified format that everybody follows it but one ironic thing is we follow it Yes. more properly when we are in student life college life when it comes to professional life we just start like with some of the other like okay this is not important we will take this only so that kind of things happens but okay, we are going to discuss about all the components in today's class or today's live session. That why it is important and why we should stick to the whatever format is given to us. Yes, sir. Yes. तो शुरू करते हैं विभा फर्स्ट ऑफ ऑल कि असेसमेंट में सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज what you will take from the patient, what information you need from the patient, according to you. So first तो मतलब उनका नाम demographic data basically name, age, gender, occupation and address. After that we'll go for chief complaints कि Wait, उनका wait, wait, wait. chief Before going to chief complaint, we need to discuss now why name, age, and gender, everything is so हाँ, much important. yes sir. Yes. So why name is important? So so you can explain it in a better way. Okay. So name is important because to address the patient, let's say for example, somebody is coming to us for treatment and we are going to spend some time with that patient to evaluate what is wrong with them. So if we are calling somebody just like, hey, hello, bhai saab, behan ji, it doesn't look good, right? If I am patient, I will not feel comfortable sharing my information with that person. So obviously we need that how to address that patient. So it's best way that we know the patient's name. We can easily communicate with them. That's the best way. That is why we address the patient with name, and that is why the first information we take is name of the patient, right? Then age of the patient. Why should we take age of the patient? How does it matter? Because there can be some age related conditions Yes. which we could diagnose Perfect. based on Yes. the age. Yes. Then gender of the patient. So same, some gender specific conditions like some conditions like RA are found particularly mostly in women's. So Yes. for that, Good. So that is why we are taking gender. Then date of assessment. so to see how much the patient has improved from the day he joined till the date he is coming for Yes. that. So here I will put a little bit focus on common mistake what all the professional physios are making. That is like we forget to take date of assessment, and after that, what happens that we are not taking reassessment of the patient. So because of that, what happens? The documentation, what is required, like how we come to know that, how we can prove it that whether patient is improving, not improving. So that is very important. That is why there has to be a date of assessment in every assessment we are taking. Okay. After that, next point, address of the patient we are taking, I think so, in Yes, demographic sir. data. Why are we taking address of the patient?
If the patient is living far away from the clinic, so for follow-up, we have to call him. So that is it possible for him to come on daily basis, or we should call him like for 3 times or 4 times a week, depending on his location where he stays. और अगर पेशेंट बहुत दूर रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? Set online consultation we can do, ठीक है, और कोई ऑप्शन? or we can set a home program for him which he could practice at home. And if patient requires therapist with them for the treatment? Then we can go as home visitor. ठीक है, मतलब बेसिकली आपको अपना पेशेंट छोड़ना नहीं है, आपको बस अपने पास ही रखना है। Yes, sir. ठीक है, पर तो उससे हम काफ़ी चीज़ें इसमें एथिकली रॉन्ग कर जाते हैं। क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ Okay. ऑल जब आप पेशेंट को दूर से बुला रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो हमें करना नहीं, उसके लिए हमने बहुत सारे सॉल्यूशन बताए। दूसरी चीज़ अगर आप उसके घर जाओगे या फिर आप उसको टेली रिहैबिलिटेशन करोगे या फिर यू विल गिव अ होम प्रोग्राम, तो एथिकली चीज़ ये रॉन्ग होती है कि अगर आप उसके घर गए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना खुद का भी, जिस टाइम में आप दूसरे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट कर सकते थे अपने सेंटर पे, ओके? सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आप टेली रिहैब दे सकते हो, येस दैट इज़ पॉसिबल, बट इफ पेशेंट इज़ न्यू, पेशेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द फिजियोथेरेपी वर्क्स, टेली रिहैब might not be the choice in the initial phase of treatment. And same goes for the home exercise program also. कि initial phase of treatment में हम उसको वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें हमेशा एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए, वो है ये कि रेफर करो कि उसके एरिया में कोई अगर फिजियो है, तो वो आपका नेटवर्क होना चाहिए, तो आप उसी एरिया में किसी एक फिजियो को रेफर कर दें कि भैया ये आपके एरिया का पेशेंट है, आप प्लीज़ उसको लुक फॉरवर्ड कर दीजिए, ये मेरा एनालिसिस है। अब इससे मुझे पता है बहुत दुःख होता है हमें कि मेरा पेशेंट मुझे किसी और को देना पड़ रहा है वगैरह-वगैरह, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लाइक मोर यू रेफर, sometimes also that person is going to refer you the patient in your area. It's like Hmm. always like give and take. Teamwork. Yes, team work. अगर याद हो तो लास्ट सेशन में हमने बात किया था नेटवर्क बिल्डिंग का, उसके बाद यू वेंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस आल्सो एंड आई एम damn sure you have made some network out of that. Yes, sir. Yes. So that network, why we are building, so for all these purposes. Because you know that physio is good, they will take care of the patient. So basically patient's benefit, we are taking it at the highest priority. बाद में अपना खुद का benefit. Okay? Yes. चलो, next point. The next is occupation. Occupation. जरूरी है. क्यों? So, अगर suppose carpenter है तो that is something difficult job. तो अगर उनको suppose fracture हुआ है तो we could relate it with the work he does and for the amount of work he works. So Right. based on that we could. हाँ, उसी हिसाब से हम उसका evaluation करेंगे, उसी हिसाब से हम उसका rehab plan करेंगे, वगैरह-वगैरह, right? So that is why occupation is important. One more point of this knowing occupation is कि कोई-कोई occupation में भी common problems होते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स है तो उनको नेक पेन होना, स्पॉन्डिलोसिस होना कॉमन हो जाता है, या तो फिर अपर ट्रेपेजाइटिस होना कॉमन हो जाता है, नेक पेन या वगैरह। सेम वे कोई प्रोफेशनलिज्म में जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलर्स है, तो उनमें नी पेन होना कॉमन हो जाता है, फिर या तो फिर टीचर्स है या फिर जिसका ज्यादा स्टैंडिंग जॉब है, तो उनको भी अगेन नी पेन बैक पेन होना कॉमन होता है। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी आर टेकिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट कि हमें बाद में इवेल्युएशन के टाइम पे हमें एक जनरल सा आइडिया रहे कि उसके ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो एनालिसिस के टाइम पे हम उस पे फोकस करें, and our assessment doesn't go in very vast area, it has to go in one particular point, that is the reason. Yes. Chalo, yes. After demographic data now, after all these things, what do we take? Chief Chief complaint. complaint. Chief complaint अभी हमने बहुत बार सुना होगा ना, like क्लास में भी मैडम ने बोला होगा कि it has to be in patient's own words. हाँ layman's language में. Yes. Why is it so much important? Why it should be in patient's own words? So because बताऊँ, I can't explain it properly, but Okay, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पूछोगे, मैं लेमैन हूँ, मुझे कोई थेरेपी के बारे में कुछ पता नहीं, एनाटॉमी मुझे नहीं पता है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि हाँ, मुझे 2 दिन से मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, और स्पेशली जब भी मैं ऐसे कुछ नीचे देख के काम करने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं जब भी कुकिंग करता हूँ या बुक रीड करता हूँ, तो मुझे वो पेन बढ़ जाता है। आफ्टर फिर मैं ज उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है।
जब मैं ऐसे बताता हूँ ना तो, और ऐसे ही वर्ड्स में जब हम लिखते हैं ना, तो हियर ओनली यू गेट 90% ऑफ द आइडिया कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। वो हमें कब पता चलेगा? अगर मैंने उसको ध्यान से सुना है उसकी चीफ कंप्लेंट को, एंड आई हैव एनालाइज्ड हिज ओन वर्ड्स। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज प्रेशर्ड, मतलब एक पॉइंट रखा जाता है कि मेक इट श्योर दैट इट इज इन पेशेंट्स ओन वर्ड्स, बिकॉज पेशेंट इज गिविंग यू हिंट्स दैट दिस इज माय प्रॉब्लम, जस्ट फोकस ऑन दैट। And chief complaints are something which we have to start working on first. If patient is telling you कि I have problems while reading, then we have to make sure that within 2 days he doesn't have any problem while reading. तब जाके पेशेंट डेफिनेटली आपके पास ही थेरेपी लेने आएगा, चाहे उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो भी मेन प्रॉब्लम है वो आप तुरंत ठीक करके देने वाले। Yes, that is why chief complaint has to be in patient's own words. Yes. After that, history. HOPI, yes sir. हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट होता है भाई हमको। So starting from the place he got injured to the time he came to hospital, everything like in story format. We should write यस it. यस यस यस। और उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या रह जाते हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखने के टाइम पे? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द कॉमन मिस्टेक व्हाइल राइटिंग दिस और टेकिंग इट? So we sometimes we tend to not listen properly and miss out some of the important points, which यस may lead to further complications. यस। एंड द पेशेंट इज लाइक, पेशेंट तो कैसा है कि वो बोलते ही जाने वाले हैं। अगर आप पेशेंट को कुछ पूछोगे ना कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो तो अपने घर में, मतलब फूफा जी है, उसने ये बताया मुझे ये करना है वो करना है, वो सब भी मैंने किया वगैरह वगैरह, सब आपको बताने ही वाला है। Right, like for example, back pain patient directly never comes to physiotherapy. They will first go to let's say, no, they will first of all wait कि पेन बढ़ेगा, उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर ने बोल दिया भाई रेस्ट करना है तुमको, मेडिसिन लेनी है, एनएसआईडीएस दे देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे, पेशेंट रेस्ट करेगा पहले और दवाई भी लेगा, दवाई के बाद अच्छा लगेगा पेशेंट। आफ्टर 1 month 15 days अगेन द पेन विल स्टार्ट टू द पेशेंट। उसके बाद पेशेंट अभी बोलेगा कि डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई देता है मेरे को, मैं ठीक हो लगता हूँ, फिर से मुझे फिर से पेन आ जाता है, तो अभी इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इस बार वो शुरू करेंगे कि अपने फूफा ने कुछ तो बताया था कि ये गर्म पानी का शिकाई करो, ये करो वगैरह करो, या तो फिर ये आसना करो, आपका पेन तुरंत ठीक हो जाएगा। पेशेंट वो भी ट्राई कर लेता है। उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ लगता है पर पेन कंप्लीटली नहीं जाता है। फिर पेशेंट को कोई बोलता है कि अरे भाई ये सब नहीं करना है, आपको जाना है वो हार्डवेद के पास या तो आयुर्वेदा के पास। वो भी ट्राई करता है या होम्योपैथी भी ट्राई करता है। उसके 1-2 महीने बाद फिर भी कुछ अगर ठीक नहीं लगता, तब जाके किसी ने बोला होता है यार फिजियोथेरेपी ट्राई कर लो। तब जाके लास्ट में पेशेंट आता है फिजियोथेरेपी के पास। So all this story you have to listen from the patient, what all things they have to do, they have done, starting from their pain and till now, how much things they have done. So everything, each and every detail is very important for us. Because as I mentioned in between कि patient ने कुछ आसना किए है, अभी हमको भी पता है कि कोई बैक पेन फ्लेक्शन बायस्ड होता है, कुछ एक्सटेंशन बायस्ड होता है। अब किसी ने तो उसको आसना बता दिया है कि आपको भुजंगासन करना है, तो उसने एक्सटेंशन बायस में भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो उससे भी पेन इंक्रीज हो सकता है। So all these things to know about it, we are taking proper history of present illness from the patient and it has to be specific to the current condition only. उसमें आप कुछ मिक्सअप नहीं कर सकते कि उसके पहले कुछ हुआ था और उसकी चीजें, क्योंकि वो चीजें बाद में आएगी हमारे पास्ट हिस्ट्री में। यस, मेक सेंस? ज्यादा मैंने ज्यादा बड़ी कहानी बता दी कि फिर ठीक करो? नहीं सर, अच्छा था। ठीक है। So next will be pain assessment. यस, पेन असेसमेंट कैसे So लेते हो यार? sir, area कि कहाँ पे pain हो रहा है, what type of pain the patient is experiencing, and to what intensity, हम्म, and what is the onset of the pain. यस, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स एंड रिलीविंग फैक्टर्स। Relieving factor. Yes. तो साइट ऑफ पेन के लिए हम उनको वो चार्ट दिखाते हैं, हमारे असेसमेंट फॉर्मेट में एक चार्ट रहता है कि आप बताओ इसमें कहाँ पे आपको पेन हो रहा है, एंड पेशेंट हैज टू मार्क इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अगर आपका केस प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, तो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन योर स्टाफ विल आस्क,
Okay, who has marked this? Then you will tell, I have marked this. Then wrong, you cannot mark it. Patient has to mark it. Why? Because patient knows better that where exactly they are getting the pain. Right? That is the first point. Second, you said type of pain. Now, type of pain, how patient will be able to know that this is this type of pain, this type of pain, or that type of pain. So how will you explain that to the patient? So sometimes patient might complete कि मेरे को यहाँ से पूरा पेन यहाँ से आर्म्स तक जा रहा है. So we should know that it may be a radicular pain because of any type of nerve compression. Second, he might say कि यहीं पर होते जा रहा है, मतलब एक ही जगह पे localized है. So dull aching or any other type, डल shocking, एकिंग, फिर stabbing. शार्प शूटिंग, फिर कभी कभी ऐसे प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन. तो उसमें ना पेशेंट्स के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं. लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस. व्हाट पेशेंट विल टेल इज कि लाइक मैं ऐसे बैठा होता हूँ ना, मुझे एकदम से लगता है किसी ने सुई चुबा दी हो ना, ऐसे ऐसे वाला पेन होता है मुझे यहाँ पे. सुई चुबा दी मतलब हमको समझना है कि ओके दिस इज लाइक प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन. ओके. फिर डल अकीन मीन्स कि हाँ मतलब बैठा होता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द होता रहता है, फिर मैं ऐसे हाथ से दबाता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, फिर थोड़ी बार फिर से तो मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है. दैट इज योर डल अकिंग पेन. Or why we are knowing, why we have to ask them type of pain, what is the significance of that? सर सो दैट वी विल नो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. अगर लोकलाइज्ड ही होगा तो सम अदर ट्रीटमेंट, अगर रेडिएटिंग होगा तो सम अदर ट्रीटमेंट. Yes, very good. So रेडिएटिंग होगा तो हम सोच सकते हैं कि नर्व कंप्रेशन है, इस वजह से शायद पेशेंट को थ्रू आउट द लिम्ब हो रहा है पेन. अगर डल एकिंग है और शार्प शूटिंग है या प्रिकिंग पेन है, उस दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? डल एकिंग और शार्प या फिर प्रिकिंग पेन? मसल इन्वॉल्वमेंट किसी में हो सकती है, किसी में सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है. यस, गुड. डल एकिंग में मोस्टली मसल्स आर इन्वॉल्व. यस. तो उसका फिर आगे हम हिस्ट्री भी कोरिलेट कर सकते हैं कि पेशेंट ने क्या है, कोई कोई एक्टिविटी ऐसी करी है, ओवर एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से मसल में पेन है, तो मोस्टली वो डल लेकिंग टाइप ऑफ रहेगा. अगर पेशेंट को कोई सडन इंजरी हुआ है कि कुछ उठाने गए और सडनली कुछ कैच आ गया, पुल आ गया, स्ट्रेन हो गया, तो उसका उस टाइम पे उसको शार्प पेन हो सकता है या फिर प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन होता है हमेशा जॉइंट में. तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंट है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि भैया पेशेंट को कौन से टाइप का पेन है. अच्छा, बीच में तुम गायब हो गए. हाँ सर, वो थोड़ा नेटवर्क चला गया था. ठीक, मैंने समझा दिया लोगों को, अभी तुम लोगों से पूछ लेना मैंने क्या समझाया. यस. Next, type of pain, then intensity of pain, how will we analyze? सर फिर हम NPRS या वास स्केल भी लेते हैं मेजर करने के लिए पेन. What is NPRS? Explain this, our viewers don't know about it. सॉरी सर. What is NPRS? What is VAS? Because our viewers might not know about it, so you will have to elaborate it. Numeric. Yes, sir. So NPRS is numerical pain rating scale. In that, we will tell the patient that it is from 0 to 10. 0 is no pain, 5 is moderate, and 10 is most severe. So we'll ask the patient ki what you will rate out of 0 to 10. Yes. So he will rate it according to his pain intensity. और VAS में क्या डिफरेंट होता है? Sir, in VAS scale, there are facial expressions for those who cannot understand the numbers, so that they will tell according to the facial expressions ki what kind of pain they are experiencing. And which is better than another? Both are good. Sorry, sir. Which is better or both are good? Uh, Okay. Now let me give you a small, what do you say, insight about this. One is subjective assessment tool and one is objective assessment tool. Okay. अब subjective objective क्या होता है? Subjective मतलब Subjective is what. हाँ मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सब्जेक्टिव में इतना समझना है कि हर एक पर्सन का सब्जेक्टिव ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. Right? For example, what is 5 for me, maybe 3 for you. What is 6 for me, maybe 4 for you. It's like that. It's like subjective opinions.
ठीक है, तो वास्ट स्केल जो हमारा है वो दैट इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट। सो इन दैट वी कैन नॉट से लाइक कि मतलब नहीं पेशेंट को 10 ही पेन है या 8 ही पेन है या मतलब इतना सीवियर ही है करके। वी कैन जस्ट एनालाइज ओके पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है। अब हर एक पेशेंट को अलग-अलग फील हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या हमारे पास फायदा है, एडवांटेज क्या है कि वी हैव सम नंबर्स टू डॉक्यूमेंट इट दैट दिस इज द नंबर ऑफ पेन दैट पेशेंट इज फेसिंग। So that is why always we think ki objective tools are better for documentation in compared to subjective tools. So that is why VAS and NPRS both are there, but most of the time we will be using NPRS for educated patients. Obviously, because if they are not able to understand numbers, then we have to go for VAS. But most of the time it is possible, then we will go for NPRS only. And let's say if patient is telling that I have 10 pain, is it possible? नो सर, बिकॉज Yeah. वो 10 वो एग्जैजरेट करके समटाइम्स दे में टेल। हाँ, तो उस टाइम पे हमें पेशेंट को समझाना है कि भाई 10 पेन है तो आप हमारे सामने भी बैठे भी नहीं होंगे, तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दो और उस हिसाब से नंबर बोला ऐसे। Yes. So that is about the pain assessment. And after pain, in pain, anything we are missing in this? सर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स एंड What रिलीविंग is, what फैक्टर्स। is the most important thing? Yes, aggravating and relieving factors. So what do you ask? How do you ask this to the patient? सो विल आस्क कि क्या एक्टिविटी करने से आपका पेन बढ़ रहा है, सो दैट विल कम अंडर एग्रीवेटिंग पेन। और जब वो एक्टिविटी आप कर रहे हो तो क्या आप ऐसा कर रहे हो जिससे वो पेन आपको आराम हो रहा है, सो दैट विल Yes. कम अंडर रिलीविंग। जैसे लाइक जस्ट नाउ आई एक्सप्लेनिंग चीफ कंप्लेंट कि पेशेंट इज टेलिंग कि बुक पढ़ते टाइम नीचे देखते टाइम पेन बढ़ रहा है, स्लीपिंग ड्यूरेशन में पेन चला जा रहा है, तो दैट विल बी योर एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई विल शेयर वन स्मॉल incidents, like for example I saw one patient yesterday only. So patient came with complaint of severe pain on the ulnar side of the hand over here, and started assessing the patient, and patient is like I am not doing anything also, like I'm just keeping the arm like this also, then also pain is severe. And I asked okay when the pain is reducing, so he's like no, I'm having pain continuously. So in that situation then what I did, I just simply performed some movements for the patient. Okay, and particular one movement actively pain was not there, passively pain was there, and on the basis of that I made my diagnosis. अब ये same case we will discuss when we are going in the examination part and when we are checking for the range of motion. तो उस टाइम पे हम ये सेम एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे कि उसका हमने डायग्नोसिस क्या किया, क्योंकि पेशेंट को कंप्लेन है कि यहाँ पे पेन हो रहा है उसको अल्नार स्टेरॉइड प्रोसेस पे, दैट टू एट रेस्ट आल्सो सिवियर पेन इससे। उसके बाद में कैसे एक्टिव पैसिव मूवमेंट से हमें पता चला वो हम डिस्कस करेंगे दैट टाइम। ठीक है, यस। So going further after pain assessment, The past surgical history if the patient has undergone. yes, past history, surgical history, then medical history, socio-economical history, environmental history, all these things are very important again, क्योंकि हर एक हिस्ट्री के हिसाब से हम उसका रिहैब प्लान कर सकते हैं और हमें पता चलेगा ज़्यादा पेशेंट के बारे में कि what all activities patient is going through and how we can analyze them better. Okay, so each and every history component, I don't think we have to go in detail right now. But if you feel specific one history we can discuss, you can just tell me. We will discuss about that. Sir, we could discuss about the socio-economic history, like the Sure. scale which we are supposed to take and what is the reason behind it. Yes. So we are using Kupuswami scale. Which scales you are using from that? Okay, Yes, Kupuswami sir. scale. Okay. In that also modified version has come now, right? Yes, yes. Modified Kupuswami scale. So again, there are various other scales also, which will tell us about that patient comes from lower middle class, upper class, or which class patient, and why it is so important in our assessment. What do you think? So, if the patient could afford the treatment, to know that. Yes, patient is able to afford the treatment or not, whether patient will continue taking treatment or not. So all this matters a lot.
And socioeconomic is not only about Kupuswami, it's all about the social status also. So what do we take in social status? Whether patient is like patient likes to mingle with other people, patient is like more socially active, patient goes to temple, for example, more social gathering likes to attend or not. तो ये सब चीजें भी हम लेते हैं. Why do we take all this information? How does it matters for us? So we can understand the psychology of the patient by knowing all these things. How much the patient interacts. Yes. Psychology, and apart from that, see, for example, patient had a post-traumatic stiffness, or let's say elderly patient, they had just went totally replacement. अब उनको क्या हो जाएगा टोटली रिप्लेसमेंट के बाद सबसे बड़ा सदमा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दादी है, उसको वही लगेगा कि यार अब मैं टेम्पल नहीं जा पाऊंगी या फिर मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगी. यू नो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट विल बी देयर फॉर देम. तो हमें वो जानना जरूरी है कि वो सोशली कितने एक्टिव है, और उसी हिसाब से हमें हमारा रिहैब प्लान करना है ताकि वो अपने जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे सोशली वो कर पाए. और क्योंकि वो मैटर करता है रिहैब में भी, अगर वो कर पाएंगे तो रिहैबिलिटेशन भी बहुत अच्छे से हो पाए. सो दैट इज व्हाई दिस ऑल थिंग्स मैटर्स फॉर अस टू नो. इट्स नॉट कि हमको गॉसिप करना है इसलिए हम जानते हैं ये सब, पर हमको इम्पोर्टेंट लगता है इसलिए हम जानते हैं इसको. Right. Yes. So next, we'll do the general physical examination in which we shall check the BMI of the patient, vitals. Yes. BMI कैसे लेंगे हम? तो वो एक फॉर्मूला आता है वेट अपॉन हाइट अपॉन वेट वाला Weight upon height in meter square. मीटर स्क्वायर. Yes. तो नॉर्मली लाइक वी हैव दैट रेशियो कि इतना होगा 22 टू 24 होगा तो दैट इज कॉल्ड एज मेसोमॉर्फिक. ज्यादा हो गया तो एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक. तो वैसे एक्टोमॉर्फिक. यस, सो दिस इज व्हाट वी एनालाइज फ्रॉम दैट, and that gives us rough idea that patient falls in which category, and depend on that also rehabilitation we can plan. So that is why we are doing this general examination. So then muscle examination, the most important part. Okay, but before that, did we discuss about like, see, when we say format of this assessment, I don't know like what are for, there are different formats and every formats are correct. I'm not saying that one format is not correct, one is not correct. History is taken, then after that we normally go for observation skills. So observation comes after the Hmm. examination according to you, or where it comes, I don't know, because this is how I have learned. I focus on observation, then palpation, and then come to examination part. Yes, sir. After the personal history, we'll move on to the observation part. Yes. So So, why observation is important? What are the things you will observe here? so swelling, tenderness, bruises, and yes, sir, all these parts ठीक. टेंडरनेस हम नहीं चेक करेंगे ऑब्जर्वेशन में क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. on palpation. Yeah. यस. तो ऑब्जर्वेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब. व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब? Sir, the part which is injured, suppose he's having any upper limb fracture. So, what is the attitude? How the patient has kept his limb? So, Yes. that will come under attitude of Yes. the So there are common attitudes of limb. Like for example, if hip dislocation is there, तो कैसा होगा पैर? फिर शोल्डर डिसलोकेशन है गई तो कैसा होगा? किसी को नेक पेन है तो कैसे उसका वो एक पर्टिकुलर पोस्चर होगा? बैक पेन होगा तो कैसे एक पर्टिकुलर पोस्चर होगा? तो वो सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है. Because these are the points, if you observe carefully, your diagnosis will be more crisp, like you will come to a proper conclusion of the diagnosis. Otherwise you will still be confused about two or three conditions, right? So that is why this we will observe first, then as I mentioned posture also we will observe, gait also we will observe for the patient. So all these things we will keep in our mind when we are doing the examination part so that we have a rough idea about it. Yes, like how I explained about this one case which I saw. So that patient had the attitude of limb like he was holding his wrist like this with other hand continuously. So I understood that he definitely has a severe level of pain right now over here. That is why he's holding it like this. If it was little less also, we will just keep it relaxed. We will not worry about holding it like this, right? So that tells us something about patient's suffering, what he is or he or she is going through.
Yes. But in that, then if wrist pain is there, we should not go for gait analysis. Yes. So that is something most of the students makes mistakes. Like they will tell that my patient had a wrist pain, but I also took gait analysis. But why? Why you have to observe his gait for that, right? So that's something we will work on. Yes. So that is observation. Then palpation, as you mentioned, tenderness. Okay. So tenderness also grades are there. According to the grades of tenderness, we will put it. And along with that, we will check for the scars. If scar is present, whether scar is adherent, non-adherent. That also we look for in the palpation part. And temperature of the part which is affected for checking whether inflammation is present or not. Anything else I'm missing over here in palpation? Uh, no, sir. Okay. Yes. Now the examination part, as you were saying, we will start with. Yes, sir. And that will check MMT, range of motion, and reflexes. Mostly reflexes are checked, not checked in ortho cases because they are more important than neurological aspect. ऐसे नहीं बोलते यार, ऐसे Okay. नहीं होता है. Okay. 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 हम ऑर्थो वाले भी चेक करते हैं भाई रिफ्लेक्सेस. ठीक है, फाइन, चलो. तो सबसे पहले हम लेंगे रेंज ऑफ मोशन. सी एग्जामिनेशन पार्ट, रेंज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because in range of motion also, as I mentioned, I was mentioning this case ki how I diagnosed it. So we will first check for the active or passive. What do you think? We should check for active or passive first. Sir, active. How much the Yes. patient is able to do because it should Yes. not go beyond his painful limit. Yes, very good. So we will first check the active range of motion, right? So as I mentioned, this patient when he was performing active wrist flexion extension as well as ulnar deviation, radial deviation, he was telling that there is no much pain. Okay, Hmm. that is the first clue. Second thing, then I checked for the passive range of motion. Passive range of motion I checked. I started with ulnar deviation. He's like some pain is there, not much. Then I check for the radial deviation. Radial deviation means patient is screaming like no severe pain is there. Okay. Then I said, okay, fine. I actually should check resisted movement also, but I got the idea, so that is why I didn't go for any resistance of the movement. But yes, let's say I went for resistance movement also. With resistance, radial deviation, no pain. Ulnar deviation, again, slight pain was there. And flexion extension, no pain. So what should be your conclusion on the basis of this? What do you think? What this patient is having? Mm, Anyone in the viewers also, if you can answer, you can just let us know in the comment section. So see, I'll give you a simple idea about this. Whenever patient is having pain while doing active movements, that means it is related to some active structures like your muscles, because muscles are the ones which are performing the movements. So while performing active movements, if you have pain, that means you have some muscle strain or muscle related pathology. जो ये पेशेंट में नहीं था, पेशेंट ने क्या बोला, एक्टिव मूवमेंट्स पे ज्यादा पेन नहीं है. पैसिव मूवमेंट व्हेन आई एम परफॉर्मिंग स्पेशली द रेडियल डिविएशन, ठीक है, तब पेशेंट को पेन हुआ यहाँ पे. अब बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा इन्वॉल्व होगा जब मैं पैसिवली उसको मूव करूंगा, वो भी अपोजिट साइड में, विच इज रेडियल डिविएशन में. तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा जो ज्यादा अफेक्टेड रहेगा? sir, muscles. मसल्स हो गया एक्टिव मूवमेंट में, ये हम अपोजिट मूवमेंट कर रहे हैं. और पैसिव कर रहे हैं मतलब मसल इन्वॉल्व है ही नहीं, मसल आर नॉट एक्टिंग ओनली, वी आर डूइंग कंप्लीटली पैसिव. So whatever ligaments are attached over here, Ligaments. yes, so Hmm. ligaments are affected, ligaments are strained, because of which the patient was complaining of pain. Resisted movement also. Now why should we check resisted also? Again, to confirm whether really muscle is involved or not, because resisted movement means also muscle has to work for it. So while doing that also pain is not that much, that means definitely some passive structure is involved, which was your ligament. So that is how with the only active, passive or resisted movement, we can make a kind of diagnosis that yes, this is the problem for the patient. Understood? So it was like ulnar collateral ligament was affected. And let's go further. Patient's history was something like patient had performed some reverse curls for biceps and with heavy weight. So while doing that, definitely there was overloading over here in the structure, and because of that, his ligaments were sprained.
and that patient was getting pain. So this is how we come to a conclusion with help of this examination parts. Right? Makes sense? Yes. So So next is yes, range of motion के बाद muscle strength MMT. yes, MMT के तो grades हमको पता ही है. We use Kendall grades or Oxford or MRC Oxford. gradings or plus or minus, plus and minus grades. Depends. Mostly like we are using MRC grading system. But if you want to go through like really in deep knowledge, we use the plus and minus grading system, which is also MRC only, but it is in more detail. Depending on range of motion, we are taking this plus and minus grades. And that too, we start with which grade first? So zero. Mm. One. No contraction, flickering No. contraction. We always start testing Start muscle. with third grade. कि Yes. पेशेंट कहाँ तक कर पा रहा है खुद से. Yes. Perfect. So always start with third grade and MMT के principles जो है वो हमें हमेशा follow करने हैं कि पोजीशन करना है, पेशेंट को स्टेबलाइजेशन करना है, फिर आपको पहले नॉर्मल साइड पे चेक करना है, फिर अफेक्टेड साइड पे चेक करना है. तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ते हैं थियरी में वो हमें फॉलो करने हैं, तभी जाके आपका असेसमेंट प्रॉपर हो पाएगा. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा वाइवा में फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ हर स्टूडेंट को कि आप बताओ कि क्यों ऐसा है कि हमें नॉर्मल साइड पहले चेक करना है फिर बाद में अफेक्टेड साइड पे चेक करना है. So, ताकि हमें उसका नॉर्मल स्ट्रेंथ कितना है पहले वो पता चले, फिर उसके बेसिस पे हम जो अफेक्टेड साइड है वो कंपेयर कर सकते हैं. यस, परफेक्ट. और कोई पेशेंट में ऐसा भी होता है कि दोनों ही साइड अफेक्टेड है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है. सो दैट इज व्हेन व्हाट वी डू नॉर्मली इज कि वी चेक ऑन द सेम बीएमआई पेशेंट का स्ट्रेंथ, मतलब सेम एज सेम बीएमआई के पेशेंट का स्ट्रेंथ जितना है उससे हम कंपेयर करेंगे हमारे पेशेंट का स्ट्रेंथ ऑन बोथ द साइड्स. दैट इज द Okay. आइडिया व्हाट वी डू. ओके, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए कि दोनों अगर अफेक्टेड है तो हम कैसे चेक करेंगे एमएमटी. ठीक है. यस. और इसमें कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस है और ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है? बिकॉज ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 वी टॉक अबाउट इट. That grade 4 means full range of motion against gravity with minimum resistance. Minimal Grade 5 is resistance. हाँ. yes, maximum resistance. So somebody is telling don't waste your precious time, doctor. Okay. Yeah. So minimum and maximum, how will we do it? So minimum according to patient's resistance first will check his resistance. So minimum resistance will be कि uh, Okay. So what normally students answer to me is like you will give two fingers resistance while giving minimum resistance, and you will use full hand while giving maximum resistance. This is what common answer I get. Okay. But again, in this one logic is there. Normally, what we should do is why we are checking on the normal side and then affected side, because normal side में हमको एक idea आ जाता है कि patient का strength कितना है. And depending on that, we apply the minimum resistance for the patient, and then we give maximum resistance depending on that. Because for you, strength will be different. For some other person's strength will be different. For other person's strength will be different. अगर ऐसा होगा कि जो जिम में 100 किलो वजन उठाता है, अगर वो अपना मैक्सिमम दे दे, तो उसके हिसाब से तो कोई भी पेशेंट का ग्रेड 5 स्ट्रेंथ होगा ही नहीं, right? So that is not true way of checking MMD. So we always have to compare with the other side, and depending on that, we apply the resistance over there. Okay. And one more way of doing that can be that we always apply in short lever. For example, if you're applying resistance in short lever, like I want to check for shoulder flexors, so I will be applying resistance over here above elbow and then do the movement. That will be for grade 4. If I apply for long lever, that will be for grade 5. जिसमें हम लीवर का हम जो यूज हम पढ़े हैं बायोमैकेनिक्स में, दैट सिंपल रूल वी अप्लाई ऑन दिस आल्सो. ठीक है. यस. so then limb length and muscle girth.
Limb length. Yes, you can explain that better. Okay. So in limb length, we check true limb length, apparent limb length, and segmental limb length. Yes. So yes. So for example, for lower limb, for true limb length, we'll start from ASIS to medial malleolus. For apparent, we'll start from umbilicus to medial malleolus, and for segmental, from ASIS to tip of patella, and from tip of patella to medial malleolus. Okay. So basically, what is the idea why we are taking this limb length measurement? Why true and apparent separately we have to take? So to compare the measurements of both the limbs, suppose in fracture cases, sometimes the limb length may have decreased. So if true is same but apparent is different, then what will be our conclusion? Mm, no idea Oh, regarding this. yes. So that is why see it is called true. Why? Because true is always bone to bone, like how you mentioned ASIS to medial malleus. So both are bony components. So Hmm. that means if any structural issues are there, structure is affected, then true limb length will be affected. If it is because of some postural correction or postural issue, what will happen? The apparent will be affected. That is why we are taking from one from the soft tissue, one from the bony segment. तो अम्बलिकस टू मीडियल मैलियस क्यों लेते हैं? क्योंकि अम्बलिकस जो है वहां पे कोई बोन नहीं है, पर वहां से हमें आइडिया आएगा कि अगर अपेरेंट अफेक्टेड है पर ट्रू नॉर्मल है, मतलब बोन की हाइट नॉर्मल है दोनों साइड, बस पेशेंट का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा डिविएट हो गया है. दैट इज वाई वी आर गेटिंग दैट लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी. So that is where we are checking for true and apparent. And segmental, why? Because segmental we will come to know which segment, like suppose true was affected, then which segment, whether femoral component is short or tibial component is affected, like that. Yes. Okay. कुछ गलत बोलूंगा तो बताना, ठीक है? Nice, sir. Yes. Mm. So then muscle girth, Yes, muscle girth to know about whether any wasting, muscle wasting is there or not, right? atrophy of muscle. Yes. And that we normally test 5 centimeter, 10 centimeter, and 15 centimeter above the joint line, as well as same thing we do for the below the joint line. And we compare it with both the sides, and then we find out whether muscle wasting is present or not. Yes. And what is the significance of that? Okay, before that, let's ask our viewers which is the first muscle to go for wasting if patient is bedridden. Anyone knows about it? And there is a very what do you say, and for that we are giving treatment to every patient also. We are giving it, but we don't know why we are giving it sometimes. Anyone? I think no one. Okay, so the first muscle which goes for wasting is your quadricep muscle. Okay, so that is why you will see that any patient who has underwent surgery or any patient, bedridden patient, we will first start with ankle to movement and isometric for quadriceps. एंकल टू मूवमेंट का तो रीजन है कि भैया डीवीटी प्रिवेंट करना है वगैरह वगैरह, फिर भी. And isometric for quadriceps. Why? Because we want to make sure that we are preserving the muscle properties of quadricep muscle, because that muscle, if you are not using even for 24 hours, it will start going for wasting. So that is why it is called as the first muscle to go for wasting. Like you must have studied already कि ortho cases में जैसे कि TKR किया, THR किया, तो orthopedic surgeons will suggest that within 24 hours we have to make sure that patient is weight bearing with the use of assistive devices. Why it is important? So that we can prevent muscle wasting in the quadricep muscle basically. ठीक है? Yes. Next after muscle girth, what is the next one? Investigations. Okay, I got a call and I think now I'm stuck over here. Same like last Yes. time. Yes, sir. ठीक है. कोई नहीं, you continue. I will answer my whatever questions are Oh, there. okay. So the next one is investigations. Like Investigations, yes. yeah, like X-ray, MRI, what or any blood reports, whatever the patient has to provide. Right.
But in that, do we have any significant value, like role for investigations? What do you think? Yes, sir. We could see like an X-ray if there is any reduced joint space or osteophyte formation in MRI. We could see, and we should also perform the special tests which are given in Maggie on Yes. particular conditions. Yes, good. So X-ray, MRI, CT scan, everything normally is referred by the other professionals, and we just can correlate with our clinical analysis. See why I say this, because as a physiotherapist, we are learning this big assessment format. Like for example, right now we are discussing this assessment format is 45 minutes. Still, it is not over. So we are taking a thorough assessment of the patient. So whatever we are taking is on the clinical representation of the patient. So we just Right. check for these investigations like X-ray, MRI, CT scan, just to correlate with whatever findings we are getting, whether it is related with the investigation or not. So that is the only significance from a physiotherapist side. Most significance what we have is from the special test. So special test, what we perform, how we do our differential diagnosis, that is our key point, which I would say that only physios are the professionals who will do it in detail. Not even doctors, orthopedicians will do in detail about this special test. Only physios do it. So that is our, I would say, like prime point that we have to Yes, focus on. sir. Yes, and as you mentioned in Maggie, it is given, and Maggie it is given with specificity, sensitivity of the test, everything in detail. So if you just go through that book, it's wonderful book. I would say if you can read 5 times also, it is never enough. Yes, sir. Yes. Um. So that is about our Maggie and investigative. Okay, now I can see. Yes, perfect. So after investigative procedures, special tests, what do we do normally? So provisional diagnosis and differential diagnosis to rule out any other possibilities we are. Uh, Yes. yeah. So ruling out and ruling in condition always depends on the sensitivity and specificity of the test which we are performing, which you will get from the Maggie again. You can always remember spin and snout rule. Have you heard about this spin and snout? No, sir. Okay. So spin and snout, I will just tell you all in the brief. Spin means specificity. If specificity of a test is high, then and we that test if we are performing on the patient, then we always rule in the condition. Spin, SPIN, SP specificity, IN means rule in. Snout means sensitivity, means ruling out the condition. Sensitivity is higher, then we rule out the condition. Let me give you one example that SLR test, straight leg raise test, is having Hmm. higher sensitivity in compared to specificity. That test we perform to find out whether patient is having any neural symptoms or nerve compression in the lumbar spine or not. So if that test is negative, we easily rule out कि हाँ भैया उसको neural compression तो नहीं है क्योंकि it is sensitivity is higher. So Yes. that is how we can get take use of this snout and spin rule for sensitivity and specificity. और उसके बारे में डिटेल में सीखना है तो आई थिंक सो आई हैव मेड वन वीडियो अबाउट दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल आल्सो. स्पिन एंड स्नाउट रूल, स्पेसिफिसिटी क्या है और सेंसिटिविटी क्या है. यस. Okay. और उसके बाद हमारा डायग्नोसिस एंड उसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फिजियोथेरापिस्ट व्हिच इज योर रिहैबिलिटेशन. ICS. हाँ. यस. हाँ, फंक्शनल असेसमेंट भी हम लेते हैं. तो फंक्शनल असेसमेंट में क्यों इट इज सो मच इम्पोर्टेंट? So to plan again the treatment protocol कि अगर functional impairment में muscle weak है तो we can focus on strengthening the muscles. Range of motion कम है तो to improve the mobility. Yes, 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 yes. So all these factors are there, and I think so PT rehab के लिए हम अलग से एक अलग से सेशन रख सकते हैं क्योंकि हाँ. उसमें भी काफी सारा डिस्कशन हो सकता है क्योंकि PT rehab प्लान करना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ फिजियोथेरापिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कितने अच्छे से अगर रिहैब प्लान करेंगे उतना ही अच्छे से हम पेशेंट को रिकवर कर पाएंगे. Right. राइट. Yes, यस. sir. So in next session we could first discuss an overview on ICF, then moving on to our treatment rehab protocol. डन. हमारे क्राउड को भी पूछ लेते हैं, 4 लोग हैं यहाँ पे लाइव.
अगर उनको कुछ जानना है, if you want to ask any questions, anything that you want us to put more focus on, you can just let us know, because that will help us for further live sessions. If not here, then you all can mention in the comments on Sir's channel, my channel as well. Anything is fine. So basically, don't be shy. Keep asking questions. Then only we will learn. I'll not say that you will learn, but we will learn. So just keep asking. All right. Okay, Viva. Wonderful session. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, we'll see you soon in next week with a new session, new topic. Yes, sir. Okay. Yeah. Sure. Have a good night. See Bye. you. Good night, sir. Bye. Good night.